हाँ जी। ये ये क्या लिखा था? हम्म। गाने वालों ने यहाँ बना दिए। ये आज पार्टिसिपेंट सिर्फ 53 हैं। अच्छा, कुछ क्या होते जाएंगे? अच्छा, ये अभी क्लास बीच में थोड़ा सा ब्रेक की वजह से। हाँ तो अच्छा, थोड़ा सा टाइम चाहिए उन्हें। अभी टाइम हुआ भी नहीं वैसे। टाइम जब हो जाए तो बता देना, मैं अभी 2 मिनट करते हैं, है ना? कर दें। भी पता नहीं अब स्टूडेंट हैं भी कि नहीं। मैम ये 50 पार्टिसिपेंट में 63 आ रहा है लिखा। Well, Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 9 of immunology. That is, the topic is immunodeficiency diseases. So diseases in which the immune system is deficient. Obviously, the title tells you that this includes the diseases in which the immune system of the body is deficient or suppressed. You title them under the heading of immunodeficiency diseases. These diseases, they may be genetically determined or they may be acquired secondarily. So those diseases you can classify them that there are primary immunodeficiency diseases and secondary immunodeficiency diseases. Primary means they are genetically determined, and as you know, when they are genetically determined or inherent disorders, they are included in the group of primary, there must be some genetic problem and they are inherited. तो इनहेरेंट जो डेफिशिएंसी है वो किसी एंजाइम की वजह से या जीनोम की डिस्टर्बेंस की वजह से होती यूजुअली, और इसमें यू कॉल देम प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीजेस. वन मोर थिंग व्हिच यू नीड टू रिमेंबर, ये आमतौर पे क्लिनिकली मैनिफेस्ट नहीं करती इन अर्ली 6 months, because all of you know that in maternal placental blood, the mother transfers antibodies in the child if the baby born is a mature baby after 40 weeks of gestation. ऐसी सूरत में उनके अंदर ऑलरेडी दे हैव गॉट इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडीज है उनके अंदर. सो एंटीबॉडीज होने की वजह से आमतौर पर क्लिनिकली इतनी जल्दी मैनिफेस्ट नहीं करती, बट यूजुअली दे after 6 months of the baby's life.
The secondary immunoglobulin deficiency diseases, they are secondary to something like immunosuppression in or immunodeficient. Immune system is deficient as the age advances. So late ages में immunity कम होती है. Malnourishment में बच्चे if they are malnourished or even adults, those who are malnourished. So those who are protein deficient particularly, because immunoglobulins are type of protein. So they are malnourished people, they also have immune deficiency. Another thing is that in many types of infections, bacterial, viral, protozoal, or other microbes infections, deficiency, immunodeficiency develop हो जाती है. Renal diseases में, sarcoidosis में, malignancy, and if those patients who are having malignancy and they are on anti-cancer drugs or they also suppress the immunity. So immunodeficiency can be quite secondarily because of many diseases. I repeat that the age, malnourishment, infections, renal diseases, sarcoidosis, malignancies, and drugs like anti-cancer drugs, they lead to deficiency of immune system. What happens when the immune system is deficient? So either the T cells or the B cells or both. So T cell key suppression, yeah, either they're eliminated or they are suppressed or they show less function, functionally energetic हो जाते हैं. Or the B cells, they do not produce the plasma cells and immunoglobulins. So either T cell deficiency is there or B cell or a mixed type of deficiency in which both can be affected. Clinically, what happens is they may present with vague symptoms like symptoms of autoimmune diseases and of malignancy or ये बंद हो गया slide पता नहीं कहाँ चली नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हुआ था नहीं सर इधर दूर सा बच गया शायद ये इसका सेंसिटिव भी पड़ा होता है. So we were talking about that what happens if there is immune deficiency or the immune system is deficient. Pyogenic infections usually are seen if there is a deficiency of immunoglobulin G. If there is a deficiency of immunoglobulin E, then something else. If there is a deficiency of immunoglobulin A, which is mucus related, so respiratory system or GIT की जो infections हैं वो commonly the patient is susceptible to pyogenic bacterial infections if there is a deficiency of IgG or if there is a deficiency of IgA. There is mucous membrane associated immune system is depressed. So respiratory system and GAT mucosal problems are there. But I'm telling you that these are isolated deficiencies, but usually isolated deficiency hardly occurs. So they involve most of the time either T cells or B cells, and sometimes the mixed. If you see this slide of primary immunodeficiency diseases which occur when there is a defect in any one of the many steps during lymphocyte development. Remember T cells and B cells, they are lymphoid origin, or you can say they belong to lymphoid lineage. तो ये thymus में bone marrow में develop होते हैं. So T cells in thymus and B cells in bone marrow. तो यहाँ पे if you see this number 1,
This is a severe combined immunodeficiency syndrome, SCIS. You get SCIDS sometimes you call, or SCIS. Severe combined immunodeficiency syndrome. It's a syndrome in which there is a deficiency of combined B cells as well as T cells, and it's usually severe. Obviously, ये प्राइमरी के सारे क्लासिफिकेशन हैं, अभी सेकेंडरी बाद में हम बात करेंगे. बट हियर यू नो दैट द बोन मैरो में बी सेल्स और थाइमस में टी सेल्स बनते हैं जब ये दोनों लिम्फॉइड लाइनेज और लिम्फॉइड प्रोजिनेटर सेल्स जब प्री बीटा या प्री टी सेल्स में कन्वर्ट ही नहीं होंगे. इफ द प्रॉब्लम इज हियर एज इट इज इंडिकेटेड बाय this. So if the problem is here, the lymphocyte stem cells, they are not converted into pre-beta cell, B cells, or not beta, pre-B cells, B lymphocytes, or pre-T lymphocytes. So there is a severe immunodeficiency disease. जब ये B और T cells की development ही नहीं होगी, या दूसरे लफ्जों में कह लें जब डेवलपमेंट नहीं होगी तो मैच्योरेशन भी नहीं होगी. When there is no development, there is no maturation. And this usually is genetically determined. आम तौर पे the adenosine deaminase is the enzymes जिसकी म्यूटेशन की वजह से ऑटोसोमल डिजीज एक हो जाती है, in which there is the destruction of the lymphocytes. So DNA synthesis nahi hota, and which is toxic to lymphocytes. So lymphocytes, they are not produced, and neither they are differentiated into T lymphocytes or B lymphocytes. And when there is no differentiation, there is no maturation, and they are not converted into P. We are only on number 1. So what happens is, तो तीन चीजें आप ज़हन में याद रखें. Number 1, the etiology, and number 2, what happens to the immune system, and number 3, how does the disease presents clinically. इतना ही pathology के point of view से you need to learn. तो जब block यहाँ पे होगा तो what will happen? The lymphoid progenitor cells or lymphoid stem cells in the bone marrow or in the thymus, they increase in number. And और बोन मैरो अगर आप एस्पायरेशन करें तो उसमें प्री बी सेल्स एंड प्री टी सेल्स और immature cells, more immature cells are seen. There are no mature lymphocytes seen in the. Agar if you remember the lymphoid lineage, that is lymphoblasts and then lymphocytes. तो lymphoblast आपको ज़्यादा नजर आएंगे. So आप leukemic picture को आप sometimes it resembles if you take the bone marrow. Secondly, there is hypoplasia of thymus. तो thymus की development नहीं होती. Thymic hypoplasia में obviously the thymus is rudimentary. What happens when you go to the other side, bone marrow or thymus से अगर बाहर निकलें, what about the rest of the lymphoid system? There will be atrophy of the organs of lymphoid system like tonsils, adenoids, और बाकी lymph nodes atrophy. The germinal centers of the lymph nodes, जहाँ पे if you remember that there is the germinal centers for B cells की जगह और होती है और T cells की और होती है. If you remember the histology of lymph node, you will find that the germinal centers for both T and B cells are atrophy. Atrophy इसलिए होती है that there is no use of that. तो use ही नहीं हो रहा तो atrophic हो जाएगा. So lymph nodes they become atrophic. Clinically आप मजीद आगे जाएंगे तो what will happen? You will find that there will be lymphopenia. So lymphocyte count in the blood, peripheral blood will be reduced. Immunoglobulins levels will be low. तो ये bone marrow से lymphoid system की तरफ, and then you go in onto circulation. Clinically, I told you that इसकी etiology में one is adenosine deaminase की deficiency की वजह से, which is a genetically determined deficiency of an enzyme adenosine deaminase, leading to
less synthesis of DNA, and that DNA, if synthesized, is toxic to lymphocytes and destruction of lymphocytes is there. This is an autosomal disease. Another is 50% of the cases are X-linked, जिनमें genetic mutation हो जाती है. Interleukin जो होते हैं different, that is interleukin 2, 4, this interleukin 2, interleukin 4, interleukin 7, 9 and 15. तो उनकी जो जीनोमिक एक्सप्रेशन या रिलेशन है उसमें चेंज आती है, जिसकी वजह से वो lymphocyte functionally they become as these interleukins, they are not secreted on the surface of these molecules, so these molecules or the cells, they do not perform their function. So ये 50% cases जो है आमतौर पे इस वजह से होते हैं. 50% are autosomal and 50% are because of this genetic sharing of or encoding of genome of the cells. There is a sharing, और immunoglobulins जो बनती हैं वो chemical mediators interleukin, different interleukins जो हैं उनके ऊपर receptors पे they are not secreted, so there is no affinity for antigens, and so there is no response of immune complex, so immunodeficient. The patient is immunodeficient. So clinically, I told you that there is thymic hypoplasia, और दूसरी बात जो है वो immunoglobulins कम होंगी, और bone marrow अगर देखें तो आपने leukemia की picture होगी, and the lymphoid system will be atrophied. और clinically naturally अगर आपके पास T cells नहीं है तो T cell mediated immunity भी suffer करती है, और immunoglobulin related immunity is also affected. So you can say the patient is susceptible to pathogenic bacteria because of deficiency of IgG. The patient is susceptible to the intracellular bacteria, viruses, the fungi like Candida, cytomegalovirus, or Pseudomonas particularly. So intracellular bacteria, viruses, fungi, and protozoa sometimes. So the patient is susceptible to infections. The patient इतने सारे microbes के लिए susceptible हो तो life expectancy is reduced to a great extent. And it is exactly like AIDS virus. So AIDS virus that is an acquired or secondary immunodeficiency disease. जो HIV वायरस की वजह से होती है, उसमें भी ये lymphocyte depletion होने की वजह से patient is susceptible to many organisms of patient. HIV की वजह से नहीं doesn't pass away, the patient goes away because of multiple infections of many systems, so uncontrolled infections of the whole many systems of the body, leading to final death of the patient. So there is a lot of depletion of lymphocytes in HIV virus. So we'll talk about that afterwards as well. The second is thymic hypoplasia. We already talked about it. That इसमें जब thymus सिर्फ involved है, फर्क पहले में और दूसरे में सिर्फ ये है कि thymus is hypoplastic and there is no development of thymus, और लिहाजा what happens is T cells जो हैं वो नहीं बनते. But this immunity which is related to T cells or immunoglobulin related immunity is there. जब T cells नहीं बनते, you know that T cells are of two types, helper T cells and cytotoxic T cells. One are CD4 cells, the other are CD8 cells. Helper भी one है, helper 2 है. और helper जो 2 है, that is macrophage related. So macrophage related or cytotoxic related जो immunity है, that is affected. लेकिन ये चूंकि normal काम कर रहे हैं, so this is there. In thymic hypoplasia, because of the hypoplastic thymus, atrophied thymus में T cells, so circulation में भी T cells कम होंगे, lymphopenia भी होगा, but that will be due to T cells. T cells normal होंगे, immunoglobulin levels normal होगी, और ये this is called congenital thymic hypoplasia. The other is T signaling. The third one is this is T signaling deficiency.
अच्छा, वो टी सिग्नलिंग क्या है कि थाइमस टी सेल्स तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो उससे प्री टी सेल्स भी बन रहे हैं, बट व्हाट हैपेंस इज द ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसडक्शन लफ्ज कहना चाहिए, ये सेल्स की नहीं हो रही इनटू साइटोटॉक्सिक CD8 सेल्स, साइटोटॉक्सिक lymphocytes और CD4 cells. So there is no conversion of or transduction of the pre-T cells into, so signal जो है वो सही नहीं जा रहे थे, जिसकी वजह से differentiation into CD4 and CD8 cell नहीं हो रही। तो जो इसमें और नंबर 2 और नंबर 3 में क्लिनिकल फीचर्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही होंगे। With an addition in congenital thymic hypoplasia, if you remember in embryology, the thymus development means there is involvement of third and fourth pharyngeal pouch, और ये thymus की development is from third and fourth pharyngeal pouch, तो वहाँ की वजह से जब thymus develop नहीं होता तो एक और gland है which is an endocrine gland जो third और fourth pharyngeal pouch से embryology में अगर if you recall the knowledge, and that is parathyroid gland. So parathyroid gland which are present on the posterior surface of the thyroid gland, there are 4 parathyroid glands, और उनका काम है the release of parathyroid hormones which controls the calcium level of the body. So what there will be hypocalcemia. So congenital thymic hypoplasia can present as a case of tetany when there is low calcium levels. So parathyroid hormone की not development होने की वजह से there will be deficiency of parathyroid hormones, और parathyroid hormone जब deficient होता है, so what happens is there is no release of PTH, and PTH, as you know, controls the absorption and the excretion of calcium from the kidney and absorption from the GAT. So it is concerned with calcium homeostatic metabolism. तो कैल्शियम होमियोस्टेसिस नहीं होती, the patient में level of calcium is low, you call it hypocalcemia, and when there is hypocalcemia, there is increased muscular twitching and tetany, तो ये disease develop हो जाती है। Number 4 is X-linked A gamma globulin, जैसे कि ये लफ्ज बता रहा है X-linked है ये, और इसमें globulins नहीं बनते, you can see it over, where is this? This is 4. ये क्यों होता है? दिस इज एक्स लिंक डिजीज। एक्स लिंक डिजीज उसे कहते हैं, जेनेटिक्स अभी आपने पढ़ी नहीं है, आई एम श्योर, बट ऑल ऑफ यू नो दैट क्रोमोसोम्स में मेल में एक XY होता है, फीमेल में डबल X। एक्स लिंक का मतलब ये होता है कि ये एवरी डिजीज विच इज एक्स लिंक, उसका मतलब उस क्रोमोसोम जो मेल से आता है और फीमेल में, तो अगर the females are carrier, they have got the genomic problem in that, उसमें this the name is Britain's disease, A gamma globulinemia भी कहते हैं, और AGL भी कह देते हैं, इससे जो भी है Britain's disease। BTK is Britain's tyrosine kinase is the enzymes which is deficient, और इसलिए उसका एंजाइम का नाम ही टायरोसिन काइनेज, और उसका ब्रिटन इज द नेम ऑफ द पर्सन। ब्रिटन टायरोसिन काइनेज वो क्या करता है, वो प्री बीटा बी सेल्स को बीटा ही निकलता है। प्री बी सेल्स दे आर नॉट कन्वर्टेड इनटू, so you can say immature B cells are more found in bone marrow, whereas the mature B cells in circulation are not। ये circulation है जो पाए, तो प्लाज्मा ये लिखा हुआ है ना। Bone marrow में you can have more pre-B cells, you can have more lymphoid progenitor cells or immature lymphoid series cells. You can there are immature B cells are B lymphocytes are deficient, and in circulation the B lymphocytes are deficient, plasma cells are deficient, B cells जो हैं they transform into plasma cells, plasma cells जो हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाती हैं। सो इस प्रॉब्लम में एक्स लिंक में, ये एक्स लिंक हाँ मैं बता रहा था, इसे इसलिए कहते हैं कि ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है इन विच द फीमेल्स आर द कैरियर, इट इज जस्ट लाइक हीमोफीलिया।
हीमोफीलिया में फैक्टर 8 डेफिशिएंसी की वजह से विच इज एक्सप्रेस्ड ऑन द एक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल, तो डबल एक्स में से एक एक्स के ऊपर ये क्रोमोसोम होता है. सो व्हेन इट इज a recessive disease, so X-linked recessive disease डोमिनेंट तब कहते हैं जब एक क्रोमोसोम पे भी हो तो वो डिजीज मैनिफेस्ट करे, लेकिन अगर रिसेसिव तब कहते हैं जब दोनों में से एक के ऊपर हो तो वो जीन जो एक के ऊपर होने से डिजीज मैनिफेस्ट ना करे उसे रिसेसिव कहते हैं, और पेशेंट बिकम्स कैरियर. सो फीमेल्स आर कैरियर्स. लेकिन डोमिनेंट उस वक्त कहते हैं जब एक जीन म्यूटेशन या जीनेटिक चेंज भी क्लिनिकली मैनिफेस्ट करती है, दैट इज डोमिनेंट जीन. तो रिसेसिव जीन है ये, एक्स लिंक्ड है, फीमेल्स आर कैरियर्स. और मेल में जब एक्स वाई होते हैं, वो जीन जब मेल में जाता है तो वाई के ऊपर तो होता ही नहीं क्रोमोसोम, सिर्फ एक्स ही होता है. तो फीमेल्स आर द कैरियर्स एंड मेल आर द सफरर. तो ये हीमोफीलिया में भी ऐसे ही होता है. एक्स लिंक्ड एक गामा ग्लोबुलिनीमिया व्हिच इज ब्रिटन्स डिजीज में भी यही होता है. एंड इटियोलॉजी इज दैट ब्रिटन टायरोसिन काइनेज एंजाइम इज डेफिशिएंट, जिसकी वजह से मैंने पहले ही बताया है कि ये जो इससे पीछे वाले सेल ज्यादा होते हैं बोन मैरो में, मैच्योर सेल्स नहीं होते, इमेच्योर सेल ज्यादा, स्प्री भी ज्यादा होते हैं, और लिम्फोइड प्रोजेनेट और इमेच्योर सेल भी कम होते हैं, और सर्कुलेशन में भी मैच्योर बी सेल्स, plasma cells are less, and all immunoglobulins are low. It has got nothing to do with the cell mediated deficiency. So इसका मतलब ये है antibody mediated deficiency of any type, maybe IgG, IgA, IgM or IgE, वो they can be manifested. Usually तो कोई सी भी immunoglobulin जो ज्यादा deficient हो उसकी patient is more susceptible to that. But see, this T cell mediated or cell mediated immunity is okay. So it clears those infections जो जिनकी जो T cell deal करते हो. So those infections are cleared, but the rest of the infections जो immunoglobulin related होती हैं वो they are not clear from the body, and the patient is susceptible and suffers from those infections. Number 5 is the combine. This is a wrongly written over common variable immunodeficiency disease. This is CVID. This is not combined. It is common variable immunodeficiency disease. इस common में ये है कि ये देखें. This is common means all 4 antibodies are. तो ये चारों जब होंगे तो ऑलमोस्ट इट मीन्स टू द सेम, विच इज जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसकी होगी. इसकी जो प्रॉब्लम है वो दैट इज डिफरेंट. दैट मीन्स इन दिस डिजीज द etiology, it is not neither X-linked nor it has got anything to do with the bone marrow or BTK deficiency. Rather, this deficiency is usually due to उसमें this common variable, all 4 antibodies they are the only thing is that there is some enzyme deficiency which is not given in the literature, in which the mature B cells they are present. फर्क सिर्फ ये होगा इस X link में और ये कि peripheral circulation में जब when you go to study the cells, the mature B cells are there, where in X link the mature B cells are deficient. लेकिन प्लाज्मा सेल्स एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर डेफिशिएंट इन बोथ द डिजीजेस, और इसका आमतौर पे इसका etiology is not very clearly known. Rest of the picture is the same. This secretive Ig, secretive is again a wrong word written over here. Selected IgA deficiency. That is means there is specific. The only thing is कि इसमें ये G है, ये E है, ये M है, और this is A. यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये चारों नहीं, बल्कि this is only and only the 7th problem is that this 6th or so, that is here. ये जो if you see over here, this number 6, ये this immunoglobulin, plasma cells, they secrete immunoglobulin G, E, M, all. They are not deficient. It's only the deficiency of Ig.
And I have already told you when there is a deficiency of IgA, the selected IgA deficiency syndrome or a disease, secretive nahi hai love, it is a selected IgA deficiency. So isme there is a block over here, some enzyme which is deficient, and that leads to deficiency of IgA, but the rest of immunoglobulins are normal. IgA जब deficient हो तो IgA, as I told you in previous sessions, that this is a dimeric or trimeric immunoglobulin, and और इस IgA का काम जो है वो that is that it mediates the reaction against the mucous membrane of respiratory system and GIT. तो क्या होगा पेरिफेरल सर्कुलेशन में तो आप ये सोच सकते हैं ये सारी चीजें नॉर्मल होंगी, एवरीथिंग एक्सेप्ट दैट देयर विल बी अ डेफिशिएंसी ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ए, और इम्यूनोग्लोबुलिन ए जब डेफिशिएंट हो तो दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द म्यूकोसी ऑफ जीआईटी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो वो डिजीजेस व्हिच आर रिलेटेड टू like enterococci of GIT and parasitic infestation and respiratory में भी कुछ hemophilus और दूसरे बैक्टीरिया हैं जो IgA क्लियर करती है, but as this is not even this, many viruses are there. It's not the corona, forget it. Corona, although it involves the lungs, but it is not IgA related. अभी तक ये सही exactly पता नहीं है. Usually they say it is immunoglobulin G. It's not A. But in many infections in which are being cleared by IgA, they predominates and the patient is having a disease of deficiency of IgA. So respiratory system और GIT की infections common होती हैं, वो clear नहीं होती. बाकी cell mediated और other immunoglobulin antibody mediated problems are not there. One is the Bear lymphocyte syndrome. So इसमें क्या होता है कि Bear lymphocyte syndrome का मतलब ये है कि अच्छा ये this is very interesting that CD4 cells they also induce the major histocompatibility complex molecules on mature B cells. We already talked about that. That is class 2 MHC molecules की expression नहीं होगी तो ये इसमें what happens is के problem हालांकि is bare lymphocyte means that those lymphocytes they are bare. Bare means they don't have envelope, or you can say they don't have a dress on them. So CD4 T helper cells they induce the maturity and the development of B cells by MHC molecules. That जब ये MHC molecules जो हैं इसे नहीं करते तो again the immunoglobulin problems are there, although it's a lymphocyte syndrome. Hyper IgM syndrome is the last one, and this is what happens is कि इसमें भी यही है कि that the T cells they induce certain chemicals so that the mature B cells are induced and they express MHC molecules and they only produce transduction of B cells, leading to more synthesis of immunoglobulin M, and the rest are deficient. So जिस तरह यहाँ पे IgA was deficient and all other three were normal, in hyper IgM में there is more. It was a deficient. ये deficient थी, ये normal थी. इसमें these are all three are deficient and there is hyper IgM. IgM is a pentameric molecule. Immunoglobulin का आपको ये पता है और ये यहाँ इस diagram में भी आपको नजर आ रहा है. This is a pentameric molecule. तो IgM आमतौर पे acute illnesses को handle करता है. So chronic illnesses related to antibody mediated reactions, chronic diseases related to antibody mediated are the patient are sufferers. Acute illnesses आमतौर पे पता नहीं चलती because there is hyper IgM and this is again an X-linked. So usually the males are sufferers, whereas the females they do not. They are not the sufferers, so they are the carriers of this disease.
There are some other problems which are not shown in this diagram, that sometimes immunodeficiency is seen with decreased platelets, eczema, and recurrent infections are there, and these are usually age related. It's not shown over here, but another primary immunodeficiency disease which is usually seen in old age people, and that is they have got decreased number of platelets. Sometimes the old age people, they have eczema, which is not that eczema, or dermatitis, skin disease. वो आप अक्सर आप उसकी if you try to find out the cause behind that, you are well, that is only age related dermatitis, फारिश होती है, dermatitis, and eczema is there, and that eczema is most of the time due to the depressed immunity or immune system with age. इसी तरह प्लेटलेट काउंट्स आमतौर पे एज के लिहाज से कम हो जाते हैं. इन वेरी ओल्ड पीपल platelet counts are come, and sometimes they come with the bruises and all that. So eczema, low platelet count, and obviously you also know that old people, they come usually with recurrent infections. So respiratory system की particularly infection उनमें ज़्यादा होती है, and after every month they have got infection, and that is also because age related. And so uski etiology is not known, so you can place it in the group जिसमें आप unknown group कह सकते हैं या others. एक चीज, the only thing which is left is that ये जरूरी नहीं है कि it is T cell or B cell immunodeficiency, or sometimes people they also have deficiency of innate immunity. That is also congenital. और वो innate immunity congenital में it is usually related to soluble proteins, and particularly the complement system. So complement system में C3 complement 3 की deficiency की वजह से the patients they are more susceptible to pyogenic infections, whereas C1q and C complement 2 and complement 4 की deficiency is also seen. And those people who have got usually a deficiency, congenital or inherent, or deficiency which is you call include in the group of primary immunodeficiency diseases, तो ये innate immunity की बात हम कर रहे हैं. I'm not talking of T cell or B cell immunity. So this whole diagram explains the T and B cells. और उसके बाद एक छोटा सा ग्रुप है जो एज रिलेटेड है. अनदर ग्रुप है जिसे आप कह सकते हैं इननेट इम्यूनिटी जिसमें डेफिशिएंट. इननेट इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी भी प्राइमरी हो सकती है एनके सेल्स की वजह से और फॉर एनी अदर रीजन. एंड second thing is the deficiency of complement system. You have already read it in the subject of physiology that complement 1 की deficiency हो तो patients are more susceptible to pyogenic infection. Complement 2, sorry, complement 1q and this complement 3 जो है that is pyogenic infection के लिए susceptibility होती है उन cases में जिनमें there is inherent deficiency of complement 3. तो क्लासिकल पाथवे और उसमें C1q और C2 and C4 उनकी डेफिशिएंसी में यूजुअली द पेशेंट दे हैव गॉट SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस की का रिस्क बढ़ जाता है उनमें से. सो यू कैन से द डेफिशिएंसी ऑफ कॉम्प्लीमेंट 1q, this complement 2 and complement 4 की deficiency inherent हो या congenital हो तो उस सूरत में इन complements की deficiency में the patient are more at risk of developing systemic lupus erythematosus at later stages. Complement 5, 6, 7, 8, these complements की में patients usually are more susceptible to organisms like Neisseria gonorrhea, Neisseria meningitidis, sorry. तो नाइसीरिया आपने बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ा होगा. देयर आर टू टाइप्स मोर कॉमनली, गोनोकॉकल एंड मेनिंगोकॉकल, दे आर डिप्लोकॉकल. सो नाइसीरिया मेनिंजिटाइडिस इन पेशेंट्स में ज्यादा होता है जिनमें देयर इज कंजेनिटल प्राइमरी डेफिशिएंसी ऑफ कॉम्प्लीमेंट 5 एंड कॉम्प्लीमेंट 8 particular. Phagocytic deficiency being sometimes is there seen in as congenital problem, or usme obviously you know that this phagocytosis ki agar ho to granulomatous diseases are usually more commonly seen. So that was all about primary immunodeficiency disease.
Secondary immunodeficiency, I have told you that related to aging, malnutrition, infection, renal diseases, autoimmunity, sarcoidosis, कैंसर एंड कीमोथेरेपी। तो इनमें आमतौर पे अब ये वैसे तो 6-7 नाम हैं, बट देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कैंसर। कैंसर इज वन वर्ड, एनी टाइप ऑफ कैंसर, any chemotherapy. So it's a long list of secondary immune. So immune deficiency secondarily can occur एज की वजह से, मेल न्यूट्रिशन की वजह से, और बहुत सी ये जो डिजीजेज हैं, ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर, तमाम कैंसर पेशेंट्स में देयर इज इम्यूनोसप्रेशन। और केमो एज दीज ऑल पेशेंट्स आर ऑन कीमोथेरेपी, तो देयर इज इम्यूनोसप्रेशन। सर इंटरेस्टिंगली ट्रांसप्लांट्स जब करते हैं हम, तो उसमें इम्यूनोसप्रेशन हम खुद करते हैं ताकि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ना। और आपको ये भी मैंने बताया था कि ट्रांसप्लांट्स में आम तौर पे अगर आपको किसी को ट्रांसप्लांटेशन का पेशेंट देखा हो, तो यूजुअली वो मास्क लगा के रखते हैं, जिस तरह हम आजकल कोरोना में लगाते हैं, बिकॉज दे आर ससेप्टेबल टू मेनी इन्फेक्शंस। तो इम्यूनोसप्रेशन होने की वजह से दे आर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शंस। तो बच्चा बंदा अच्छा वाला ट्रांसप्लांटेशन करवा के आया हो, लेकिन खुदा ना खास्ता गुजर जाए बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, so that is very important. So at least for 12 weeks they are asked to put on a mask on, so that they should not receive any infection. तो इम्यूनोसप्रेशन होती है तो नंबर एक तो वैसी होती है, नंबर तो आमतौर पे उन्हें इम्यूनोसप्रेस ड्रग्स दी जाती हैं ताकि ट्रांसप्लांट रिजेक्ट ना हो। तो उसकी रिजेक्शन से बचाने के लिए भी देते हैं इम्यूनोसप्रेशन, और वैसे इम्यूनिटी भी कम हुई भी होती है, तो उस सूरत में हमें उन्हें सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाना होता है। I'm not going into the detail of secondary more than that, except that one example I can give you, that the HIV virus is a retrovirus, which is also called HIV virus. Lentivirus family से ये belong करता है, HIV1 and HIV2. Pakistan में HIV2 is common, but the characters are almost the same. Here, this is a structure is seen over here. दो चीजें याद रखें, glycoprotein 120 and glycoprotein 41. ये T-shaped molecule जो है वो, this is GP, glycoprotein 120 on the surface of the HIV molecule, and this is 41, the other जो उसमें penetrate करता है। ये मैंने सिर्फ इसलिए स्लाइड दिखा दी ताकि आपको ये बाद में वायरोलॉजी में डिटेल भी पढ़ाई जाएगी, लेकिन सिर्फ ये याद रखें कि what happens is there is conformational changes on glycoprotein 120 and conformational changes on glycoprotein 41। इससे ये होता है कि CXCR4 एंड रिसेप्टर्स होते हैं CCR5, और ये दे लीड टू साइटोटॉक्सिसिटी ऑफ CD4 सेल्स। तो ये होता क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन से अटैचमेंट होती है, पेनिट्रेशन होती है, और RNA एंटर्स इनटू the nucleus, and there is reverse transcription or reverse DNA synthesis, multiplication and budding of viruses, और एक से कई viruses बन जाते हैं, and those viruses, there is a viral budding, you can call it proviron बनता है, और उससे virus budding होती है, and so they multiply. The only thing which was important for you, as an example, I showed it over here, but this will be taught to you in detail in the subject of virology. लेकिन होगा क्या? What happens is when there is the CD4 cell is infected with the HIV virus, it is cytotoxic. So what happens is cytotoxicity वजह से CD4 cells destroy हो जाते हैं, and there is inversion of ये एक बड़ी बात है कि CD4 cells normally in circulation, आप अगर CD differentiation करें immunocytochemistry की मदद से, normally peripheral smear आप laboratory में भेजेंगे तो lymphocytes सिर्फ आप देख सकते हैं, you cannot differentiate it as a T cell or a B cell. It's only the differentiation with the immunocytochemistry, you label it with certain dyes and you can differentiate whether it is a cluster differentiation. So T cell और B cells को differentiate करने के लिए normally peripheral smear में आप differentiate नहीं करते, they are all small lymphocytes. Large lymphocytes आमतौर पे NK cells को कहते हैं. Small lymphocytes में T cell और B cell की differentiation नहीं होती. So, or I'm sorry, the time is running. This is I can only you will see it in your next
वायरोलॉजी लेक्चर एज वेल। थोड़ी सी बात याद रखें कि इसमें वायरीमिया जो है ना प्राइमरी इन्फेक्शन होती है, उसके बाद ये ब्लू लाइन जा रही है, इस तरह ये वायरल लोड है। क्लिनिकली पेशेंट एक पीक पे होता है, एक्यूट फेज आती है, उसके बाद देयर इज अ फेज ऑफ क्लिनिकल लेटेंसी। एचआईवी के पेशेंट ऐसा लगता है दे आर नॉर्मल, so there is a latent period clinically, and then constitutional symptoms again occurs, और उसके बाद infections opportunistic pathogens they attack, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम हो गई होती है और बहुत सी मल्टीपल इन्फेक्शन होने की वजह से। सो ये जो ऐसा है, ये ब्लू लाइन, दिस इज क्लिनिकल 4 stages: acute, clinical latency, opportunistic, and death. ये constitutional symptoms of infections are there. Viremia आमतौर पे the start is very high and then it decreases, और उसके बाद उसकी copies ये this is viral load. तो viral load शुरू में ज्यादा होता है, दरमियान में कम, फिर viral load बढ़ना शुरू हो जाता है. So you need to remember the viremia and the clinical picture. And third point which you need, as they are cytotoxic to CD4 cells, so inversion. So CD4 normally ratio उनकी 5 गुना होती है. CD4 cells are 5 times more than the cytotoxic or CD8 cells. लेकिन inversion होने से या कम होने से CD4 cells कम हो जाते हैं और CD8 ज्यादा हो जाते हैं. Sometimes it is reverse. Sometimes it is 1:2 ratio, 1 से 5 की बजाय 1:2 रह जाती है. कई दफा रिवर्सल भी हो जाती है, that cytotoxic CD8 cells are more and CD4 cells are less. So ये डिटेल में आपको बाद में भी पढ़ा दिया जाएगा. Thank you very much, and next session will be about amyloidosis, and that will be, we will be done with the subject of immunology as well as undergraduate level is concerned. Thank you very much.